And we have started initiating with a joint declaration of intent with Canada. And we're looking forward because they have heavy results, especially in Saskatchewan area. And with Russia, we have multiple interests. One is to have the resources as well as the technologies, because most of the technologies which have come out from the old era of Madam is working at SOA University, and she is expert in solvent extraction, and she has worked a lot on rare earth mineral extraction. Madam, you have worked on extracting high feedstocks like discarded circuit boards. How does the fundamental approach to leaching and solvent extraction chemistry it changes? Okay, you can see when we are considering an ore, so we know the minerals. But when we are coming to e-waste, is also there, also copper, nickel, and first in case of e-waste, we have to require the pre-treatment. Pre-treatment is required. You have to remove the plastic, and some organic binders are there, so the metals they are in which form, then we can go for it. But if you say simply your chalcopyrite, it only contains copper and iron, so and it is in a sulfide form, so then we can easily select the lithium reagent, but with acids. So here you have to see the chemistry. Then when suppose they have leached, when we go for the organophosphorus extractants, whereas your gold, platinum, they require TBP, tributyl phosphate, that is a neutral ligand, and medium should be highly acidic. ಇದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ which test the metal or material up to 500 बार, मतलब सॉरी 350 बार हैंडल कर सकता है, और इसका वॉल्यूम सिर्फ 3.5 लीटर। अब अगर लॉजिकली आप देखेंगे तो हाइड्रोजन एक गैस है, इसको आप कंप्रेसाइज नहीं कर सकते, मतलब आप उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं लाते लेके आ सकते, तो वो गैसेस फॉर्म में ही रहेगा, तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम बड़ा होगा। बट वी आर आप उसको प्रेशराइज करके 500 बार तक रख सकते हैं लो वॉल्यूम में, यही आपका खासियत। हाँ, अभी के लिए हम 350 बार तक हम इसको लो वॉल्यूम में रख सकते हैं, और वी आर थिंकिंग टू गो अप टू 500 बार, बिकॉज वी हैव मशीन जो 500 बार तक भी मटेरियल को टेस्ट कर सकती है। जो हमारा रिसाइकल एल्यूमिनियम होता है, वेस्ट एल्यूमिनियम से बना है ये, रिसाइकल एल्यूमिनियम से बना है, मतलब एल्यूमिनियम ऐसा मटेरियल है जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते। ठीक है। तो नया एल्यूमिनियम हमने यूज नहीं किया, तो जो एकदम नया बन के आया वो हमने उसको रिसाइकल एल्यूमिनियम के हेल्प से इसको बनाया है।
sponsoring them as you know. But we are doing their that's right. Good selection to lot of universities. Was performed. Thank you so much. That's all for the first panel. Now, panelist, very expert. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Now I request Dr. D.P. Das, Scientist, GCS, IRIMT, to moderate this panel. Thank you so much. Hello, thank you, madam. I am Dr. Devi Prasad Das. So, thanks for giving this opportunity to moderate this particular panel on use of AI and ML in mining and mineral processing ecosystems. And this particular conclave, the Brothers Mine Conclave 2026, welcomes all the participants, maybe students, startup companies, planners, and some of the administrators to this particular very informative and suggestive panel discussion. We have very eminent personalities here, very senior professors from IIT, from Professor Maji from C.V. Raman Global University, but earlier he was in MIT, Raurkela, and he was the director of one triple IT Kanchipur, and also he was Vice Chancellor of BSSUT. So we are very much fortunate. କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଲ୍ଫ ତାର ଡେଥ୍ ହେଉଛି କ'ଣଟା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟରସିପ୍ର ବହୁତ ଅଭାବ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ବିକଶିତ ଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଅଛି। ସେଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆୱାରନେସ୍ ବି ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ରାୟଜୀ ବି ସେଇ କଥା ବି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଶୋକେସ୍ ଥିବ ଆଉ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର
केडी यूनिवर्सिटी एटा को हमें एकेडमी सेशन रे भी ये अवेयरनेस को एंटर करो सो दैट ये स्टार्टअप रो आइडिया पाई से माने भी टिके उत्साहित होले से अनुसार तांकर कोर्स करिकुलम के से डेवलप कर और सेकंड होची हमर ओडिसा जो स्टार्टअप अच्छी भी तार मेंटरशिप अभाव होची तेणु आम इंस्टीट्यूट जेहेतु आम मिनरल मटेरियल एंड मेटल एंड एनवायरनमेंट रे काम करछु हमर जो अच्छी कौशल स्किल आ नॉलेज आ साइंटिस्ट माने जो काम करछन से केमिति आम विभिन्न प्रकार स्टार्टअप कंपनी को आइडिया पिच कर पारिबो और ताको मेंटर भी कर पारिबो सेटा होची हमर लक्ष्य एई प्रोग्राम द्वारा हमर ओडिसा रे आम केमति ए इकोसिस्टम को सस्टेनेबल वे रे नै पारिबो सेति में प्रोग्रामटा की पूर्वतन हमको प्रपोजल करथिले हमर डायरेक्टर सर तांकर अंडर तांकर मेंटरशिप रे ए प्रोग्रामटा हमें ये केमती करूँ को प्रोग्राम को पैनल रे केमती डिस्कशन हम कोटा स्टार्टअप को बेसी सुधार को पैनलटा और से जमी ओडिशा रत्नगर्भा ओडिशा मिनरल इकोसिस्टम आम जो रेयर दुर्लभ मृत्तिका जोटा आम ओडिशा अच्छी सबूर सेसन आमर डायरेक्टर सर मेंटरशिप सब साइंटिस्ट सब डिपार्टमेंट प्रोग्राम द्वारा आम भी बहुत जिन शिखुचु कि आम साइंटिस्ट मैंने भी से ओरिएंटेड काम जो स्टूडेंट्स अच्छा ये लाभ पाए साढ़े 3 टा